Good morning to all of you. So, so this is a third lecture on third class on Raman spectroscopy. And so, in the introductory part, we had discussed what is the basic concept, and so we discussed two viewpoints how this Raman scattering occurs. One is classical viewpoint, which views it as inelastic scattering. And the other one is the quantum mechanical viewpoint, which is on your screen, which in which you have non-quantized energy states, virtual states, up to which the excitation occurs, and then it comes down to the ground state. So this is what, if this is the energy of, it comes down to the same vibrational level as it started with, then it is Rayleigh scattering. There is no change in energy of the emitted photon, and this is purely Rayleigh scattering. So green light incident upon this, and green is emitted back as it returns from virtual state to the ground electronic state. If it is it ग्रीन लाइट उस पर सैंपल पे पड़ रहा है, वर्चुअल स्टेट तक गया और लौट के वापस आया, तो यहाँ पे v इक्वल टू 1 पे अटक गया, तो ये ओवरऑल एक्साइटेशन हो गया वाइब्रेशनल. In the other case, where we have the molecule is already in v equal to 1 state, it is excited to the virtual state, and then it is coming back to the ground state. While coming back to the ground state, it emits radiation which has so it falls back to the v is equal to 0 state. So the energy of the photon, the emitted photon, will increase because it loses some energy, and that energy is transferred to the photon, emitted photon. So that's how. So these two are the types: Raman Stokes and anti-Stokes scattering, and this we have already stated earlier. So the increase and decrease. So there is, for Stokes scattering, there is decrease in energy. Just a moment. Okay, so for Stokes scattering, there is decrease in energy by h mu, which is, we can see here, and in anti-Stokes it is the increase in energy that we see here. So overall excitation, overall change in this. So photons energy is increased in one case, in another case it is decreased. So ये आपका Stokes और anti-Stokes होता है, which is clearly seen in the Raman spectra. The Stokes scattering is more intense, and this one is less. Anti-Stokes is less intense. ये चीज़ आपको दिख रहा है. और क्यों होता है ये भी आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्योंकि v इक्वल टू 1 में जो पॉपुलेशन होगी, it starts at v equal to 1, so and the population of v equal to 1 is less as compared to v0. Vibrational quantum number, vibrational ground state is more populated. ठीक है, तो 100 में से 20 मॉलिक्यूल v इक्वल टू 1 स्टेट में है, और 80 मॉलिक्यूल उसमें अगर v इक्वल टू 0 स्टेट में है, विच इज़ द ग्राउंड स्टेट, वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट, तो ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ this phenomena is more, and so you get higher intensity on this side. So this is something that we had discussed, and we will try to learn more here. So this website will also tell you what happens. So this is normal. If you can see on the screen, थोड़ा सा इसका zoom कर लें. You can just restart this thing. So this is your the excited energy levels, excited electronic states. This is the ground electronic state with the vibrational state. So
if you start this, see, this is infrared excitation. If you give enough energy for excitation from the ground vibrational state to the excited vibrational state, and the molecule starts vibrating, it is like this. Now, so that was infrared absorption, and the abs absorption of visible light will take it to the excited electronic state, which is their real energy levels are there. This is the absorption of light, and the electronic uh, state has, so it has gone from ground electronic state to the first electronic state. अब इसके बाद ये क्या है, this is we are taking example of what is fluorescence. So ये जो green light है, ये यहाँ तक गया excited state के भी वाइब्रेशनल एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कई सारे वाइब्रेशनल स्टेट हैं, तो उसके भी हायर वाइब्रेशनल स्टेट में वो चला गया है, वहाँ से नीचे आएगा तो ग्रेजुअली it reaches the lower most vibrational state of the electronic excited state, and then वहाँ से अगर वापस आने के प्रोसेस में it is emits light, that is fluorescence, जो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है. And Rayleigh scattering is this, when it is excited here, goes there, virtual state, and comes back. Okay, and Stokes is this one. So there, this is the excitation. Molecule gets excited to the virtual state, and while coming back to the ground state, it is now in a V is equal to 1 state, excited state, vibrationally excited state, all of the ground electronic state. So you can see in the anti-Stokes again. So these are the things that tells you so this is, you can note this website. Okay, we'll talk about more on this for Raman active modes in different molecules. We go back to our slide. So I was also telling you last time that at the heart of Raman spectroscopy lies the concept of polarizability. Here there must be a change in polarizability during the vibration or rotation. If that is there, then the molecule is Raman active. That particular mode within a molecule is Raman active, and greater is the polarizability, change in polarizability, greater will be the intensity of the signal. So in the last class I had discussed at length what is polarizability, and for whether it's for atom or molecule, starting from a neutral species, when you apply electric field, it shows a distortion in the electron cloud, and the ease with which this deformation or distortion can occur, that is what you call polarized. So electron clouds get deformed or distorted, and that's, so this is what will happen when we have जब लेज़र हम डाल रहे हैं, लेज़र में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो कितनी आसानी से वो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, या किसी मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड के दौरान कितने ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ सकता है, उस पर रमन एक्टिविटी डिपेंड करेगा, ठीक है. सो वेन एवर दिस पोलराइजेशन अगर आपने डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल हैव अ डिफरेंट प्लेस नाउ, इट विल नॉट बी कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं सिस्टम पे, और एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा. सो दिस विल सो देयर विल बी क्रिएशन ऑफ अ डाइपोल, and that will the so that will be the changing point, so that we can relate. आप इस पोलराइजेबिलिटी को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेट कैसे करते हैं, होमोलुमो गैप को देखते हैं. अगर आप होमोलुमो गैप बहुत क्लोज है
that will have high polarizability, number one. Okay, we discussed all these things. Okay, so now we are at this so another how does the scattering happen? So that is the mechanistic aspect we are going to discuss. So you have, suppose हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है सॉरी, एंड ये आपका ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका. सो दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव to one side. So the visualization will be that there is a nucleus. Here you also have a nucleus, and in between the line you have electrons. So the center of नेगेटिव चार्ज अगर हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे होगा, यही चीज यहाँ पे दिखाई गई. सो दिस इज व्हाट इज शोन हियर. द मॉलिक्यूल in stretched condition, suppose you have H2 molecule which is stretched, H2 molecule when it is contracted, so H2 molecule is undergoing vibration. What will happen to the dipole? So dipole moment, so polarizability जैसे change होती है, so because of polarizability there will be change in the dipole moment. There is a dipole moment which is induced. So induced dipole moment, dipole is given by this alpha into the electric field. ये electric field vector है, polarizability into this. So this is the one cycle of the oscillating electric field जो यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे जो दिखाया गया है. So this is electric field of the radiation, ठीक है. और उस दौरान so जैसे जैसे स्ट्रेस्ड कंडीशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, ज़्यादा मोबाइल हैं, ज़्यादा इजीली मूव करेंगे. सो दे विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. सो इनिशियली जहाँ जब सो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए यहाँ पे ऐसे है. सो यू अंडरस्टैंड, यू हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेडिएशन लाइक, सो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाट इज शोन ओवर हियर. तो यहाँ पे जब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन, दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग. सो एक साइकिल में वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर मॉलिक्यूल पे पड़ रहा है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन ऑकर. सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में भी, अभी भी थोड़ी देर पहले. सो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा और एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा. सो द सेंटर ऑफ, सो डिस्टॉर्शन होने की वजह से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है. जो रिलेटिवली जो सो इट इज एंटायर इमेजिनेशन, वी आर इन आवर इमेजिनेशन वी आर फोकस्ड solely on stretched condition first. तो ये जो पहले मिडिल में था सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, अब वो थोड़ा सा इधर साइड में चला गया, ठीक है. ऐसे कंडीशन में डाइपोल, सो दिस इज योर डाइपोल दैट इज क्रिएटेड, दिस इज योर डाइपोल, द एरो वाइट एरो दैट यू सी, सो दिस इज अ डाइपोल विच इज जनरेटेड. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके इसमें सेंटर में है नेगेटिव चार्ज का, देयर इज नो डाइपोल. एंड इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन, oscillating electric field, the direction of dipole has changed. So dipole is induced and the dipole oscillates. अब दूसरा जो एग्जांपल है वो वही H2 मॉलिक्यूल विजुलाइज कीजिए. नाउ इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड, ऑसिलेट कर रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. तो एक बार एक्सपैंड कर रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में ये देखिए न्यूक्लियस, ये आपका हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो सेंटर में देखिए नेगेटिव वाइट नेगेटिव जो साइन के साथ है, दैट इज शोइंग द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दैट नेगेटिव साइन जो दिखाया गया है वो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब वो कैसे मूव करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किए. अब कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड.
So the dipole that will be generated will be very very small. Very small dipole is generated. ये देखिए जो एरो दिया गया है छोटा सा दिया गया है. So stretched condition में जब वो stretched condition में है तो it is easy to distort the electron cloud. A large dipole is generated. When it is compressed, then the distance between the nucleus, two nuclei, is reduced. The nucleus and the electron cloud is reduced. Center of electron is reduced, and so the dipole is small, right? So मतलब induced dipole का value mu induced is less in this case जब वो contracted condition में है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे in comparison you have high value of induced dipole, right? तो इस तरह से अब एक साइकिल में अब स्ट्रेस्ड कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में ये तीन पिक्चर जो दिया, तीन जो विजुअलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्टेड में एक बार अप डाइपोल मोमेंट, फिर बीच में जब जीरो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें नो चेंज, बिल्कुल सेंटर में नेगेटिव चार्ज दिख रहा था. कैन यू जूम इन? सॉरी, ठीक है सर, ध्यान से देखिए. सेंटर में क्या है? ये कह रहे थे. व्हाट इज दिस? सो वी आर लुकिंग एट द इंड्यूस्ड डाइपोल. पोलराइज होगा और नया एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा. स्ट्रेस्ड कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, इट इज़ मोर स्प्रेड आउट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर स्प्रेड आउट in between the two nuclei, and it is easy to distort the electron cloud. In a contracted condition, so we are visualizing the hydrogen molecule, जैसा कि हमने इधर ड्रॉ किया था, है ना. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ है और उसके बीच में जो सेंटर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस है. सो नाउ द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन विल बी लेस. सो इंड्यूस्ड डाइपोल का वैल्यू छोटा कम हो जाएगा. यहाँ पे देखिए, ठीक है. नेक्स्ट साइकिल में जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो इसमें फिर से दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक there will be dipole moment, but this time the it is the values are small. जितना इधर था उतना ही इधर होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा है. सो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब स्ट्रेच्ड वर्सेस कॉन्ट्रैक्टेड. सो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, अब दोनों कंडीशन में आप जब पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, सो मॉलिक्यूल इज मोर पोलराइजेबल व्हेन इट इज द बॉन्ड्स आर स्ट्रेच्ड. Molecule is less polarizable. Polarizability is small when it is contracted. Why? Because the electrons are tightly held by the nucleus in the contracted state. When it is stressed, the electron cloud gets more spread out, फैल जाता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाता है, और अब आपको डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करना और आसान हो जाता है. सो स्ट्रेस्ड कंडीशन में डाइपोल का वैल्यू जाता है, इसमें कम है. तो इस तरह से जब आप सोचिए कि मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है और उसके साथ साथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर पड़ रहा है, तो दे विल बी, इट विल जनरेट एन ऑसिलेटिंग इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा और डाइपोल का डायरेक्शन चेंज होगा. सो द इंड्यूस्ड डाइपोल ऑल्सो ऑसिलेट्स, and this oscillating induced dipole gives out the radiation and slowly loses the energy. तो ये जो होता है इसी को आप स्कैटरिंग कहते हैं. अगर वो इंड्यूस्ड डाइपोल जिस ऑसिलेट कर रहा है और एनर्जी लूज कर रहा है, इट हैज सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एज द इंसिडेंट वेव, दैट इज रेले स्कैटरिंग. अगर वो इंड्यूस्ड डाइपोल का जो ऑसिलेशन है वो कम है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रेडिएशन, तो फिर वो रामन स्कैटरिंग हो जाएगा, जिसमें कि स्टोक्स स्कैटरिंग, एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग दोनों हो सकता है. तो कभी कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. that probability is very less, that we have discussed already. So there is dipole which is induced
and the induced dipole oscillates with the incident radiation. If the uh, and जैसे जैसे वो इंड्यूस डाइपोल ऑसिलेट करता है, ग्रेजुअली एनर्जी लूज करता है और रेडिएशन के फॉर्म में चारों तरफ एमिट करता है, उसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो वो जो स्कैटरिंग हो रहा है वो सेम इसका नेक्स्ट पिक्चर में जो है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट it is the oscillation of induced dipole moment which is shown with respect to time के साथ वो ऐसा साइनोसॉइडल ऑसिलेशन दिखाएगा इफ इट इज इन लाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पे देखिए जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हमारा दिस इज आवर एग्जाम्पल ऑफ this relay scattering. So there will be energy will be emitted out which will be having, okay, so this is the thing that we keep in mind. So basic यही है कि induced dipole होता है, induced dipole is now changing its the amplitude, it is oscillating with amplitude, and that gives out some energy in form of radiation if that is same frequency as compared to the incident radiation, that is relay, we call it is relay scattering. And in case of Raman scattering, that frequency of the oscillation of induced dipole moment, it oscillates if oscillation frequency same, then it is relay scattering. Relay scattering, if it is different, oscillating frequency different, then it is Raman scattering. Stokes और anti Stokes दोनों हो सकता है. So it gives out radiation. Okay, so induced dipole we have calculated like primarily alpha, polarizability of the atom or molecule, and the electric field, applied electric field. Now ये क्या है? This formula is valid when you have a static electric field. But अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, जब आप लेज़र अप्लाई कर रहे हैं, लाइट सनलाइट डाल रहे हैं, that light it has oscillating electric field, so we have to take into account the oscillation of electric field to be correct in our description. So induced dipole moment का सही मायने में आपको समझने के लिए, if you want to understand the induced dipole moment correctly, you must add this oscillation, you must take the oscillation into account. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को भी तो कैसे करेंगे? So ये जो E लिखा है, it is undergoing sinusoidal oscillation, so you write this, give this term sin 2 pi mu naught t, so or omega t. Okay, so this takes into account for the oscillation of the electric field oscillating. So E naught when t is 0, sin is 0, the whole value goes to 0 when t is so it is the frequency of electromagnetic radiation that we are talking about. Now एटम्स, अगर एक सिंगल एटम को हम लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बिल्कुल इट इज सिमेट्रिक लाइक अ स्फीयर. ओके, द पोलराइजेबिलिटी इज आइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक का मतलब no matter in which direction you apply electric field, it will be the same. So अगर spherical होगा, if electron cloud is spherical, you apply electric field in this direction or apply electric field in this direction. So if you have a distribution of electrons, a spherical distribution of electron, then applying electric field in any direction same
well, same value of induced dipole. So we apply electric field in any arbitrary direction, same value of mu induced. So induced dipole has same value. Polarizability, so we say that the polarizability, the amount of distortion produced, is same irrespective of the direction of electric field. Such polarizability is called isotropic polarizability. So ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा spherical rotor type या atom, a simple atom will have this kind of thing. We say that they are having, okay, so in contrast to this, so in all these cases it radiates back at same frequency, and so that is Rayleigh scattering is shown. In molecules, however, polarizability may be anisotropic. मतलब क्या हुआ कि अगर एक डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें H2 मॉलिक्यूल को, तो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड डाइपोल का वैल्यू कुछ और होगा, दूसरे डायरेक्शन में बदल जाएगा. मतलब पोलराइजेबिलिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, एक में कम होगी. डिस्टॉर्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, उसकी बेसिस पे आप ही कर सकते हैं. तो ये कैसे होगा? So so as the rotation happens or vibration happens in the molecule, that polarizability will change. So that gives rise to Raman scattering. So we'll just try to understand this thing. एक मिनट इसमें आपको एक एग्जांपल में जैसे बताता हूँ. कहाँ गया हाइड्रोजन? We are taking example of hydrogen. So let's take this thing. Try to understand. So this is one example, simplest example. Okay. So this is what, imagine hydrogen molecule. ये हाइड्रोजन का है. So ये आपका center of hydrogen nucleus, and this is your electron cloud. So this is the, जैसे आप दो ऑर्बिटल जोड़ के जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ऐसा आता है ना. So you remember you were drawing this thing. ऐसा आता है ना. So यही चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं. So electron cloud appears to be like this. अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप when you are applying electric field in this direction, so this will have तो इसमें आपको along the direction आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, across this इस तरह से अप्लाई करें, तो ये जो येलो वाला शेडिंग है, ये this is the indicates the distortion. So there is greater distortion produced when the electric field is applied in this direction. और उसी contrast में अगर आप perpendicular direction में electric field apply करें, electric field applied in perpendicular direction, the distortion produced is less distortion. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम मिल रहा है ना उस डायरेक्शन में, तो इधर डिस्टॉर्शन कम प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इज ग्रेटर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन दैट वी आर सीइंग ओवर हियर. ठीक, ये दो पिक्चर इंडिकेट कर रहा है. सो इसका मतलब इसमें एक H2 मॉलिक्यूल में डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अलग अलग इंड्यूस्ड डाइपोल मिलता है, अलग अलग पोलराइजेबिलिटी है. मतलब डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड in the electron cloud is not the same when we apply electric field in different directions. और ये example है anisotropic polarizability. So we say that hydrogen molecule has a anisotropic polarizability, है ना. So anisotropic polarizability is this one, when you apply electric field and the electron cloud is distorted to different extent. Okay, so the value of induced dipole is different in different direction. And distorted
Okay, so polarizability, if it is different when it is applied parallel to the molecular axis, this is the principal axis, and this is perpendicular to the, ये आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज polarizability along this direction is alpha parallel because it is a parallel to the principal axis, and this will be called alpha perpendicular. So when these two are different, we call it, they have anisotropic polarizability. So usually alpha parallel is greater than alpha perpendicular in this particular case that we are seeing for because you can clearly see it has greater electron density along this line when it is applied along the principal axis, and so we can produce greater distortion, whereas in the perpendicular direction it is encounters less electron density, and so distortion produced is less. So इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी है वो अलग अलग है, so दोनों कंडीशंस में. So we say that such molecule possess anisotropic polarizability. Okay, so let me go back to the initial thing where what we had discussed. So this was okay. So this is the point that we are talking about. So we have when we have identified the mu, the induced dipole is equal to alpha into E, and then E is the electric field which is oscillating. So we add this term sine 2 pi mu t, and if so we have just understood what is the difference between if it is atom, electron distribution is symmetric, polarizability is isotropic, मतलब different direction में electric field apply करने पे एक जैसा आएगा. और अभी जैसे molecule का example लिया, simplest molecule diatomic molecule H2, it has an anisotropic polarizability. So anisotropic polarizability अगर है तो Raman scattering तो जरूर होगा. Let's see some more things about this. So mathematical part में अभी आपने देख, so polarizability भी change कर रहा है. So you must also add the change in polarizability, take into account the, so polarizability यहाँ पे जब फार्मूला लिखा है वो कांस्टेंट दिख रहा है. You must account for the change in polarizability as the molecule oscillates. Stretched condition में अलग है और contracted condition में अलग है polarizability. So alpha will also have a function taken. You must take into account the undergoing, if the molecule is undergoing vibration or rotation, alpha is variable, it is oscillating, it is also changing in a sinusoidal pattern. So let's write for that thing. So we can actually give a term. So alpha can be expressed like this. Alpha is a constant term plus the additional, as the molecule vibrates उसमें जो चेंजेस आएगा उसको अकाउंट में लेने के लिए एडिशनल टर्म है. तो ये रेट ऑफ ऑसिलेशन से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज हियर 2 पाई म्यू टी, तो उसका साइनोसॉइडल फंक्शन है, और बीटा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट डी अल्फा बाय डी क्यू. क्यू इज द वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट. So beta sine 12. So this is the expression for polarizability because molecule is vibrating with certain frequency mu vibration that we can talk about. So उसकी वजह से जो polarizability में change आएगा. तो अब ये full term को आप लिखिए. This is for polarizability. This is your polarizability term which is undergoing change with time, and this is the electric field. ठीक है, polarizability into electric field ही है,
but now you are taking into account the variation in polarizability as the molecule vibrates, as the molecule undergoes stretching and compression, like that. So, and the electromagnetic radiation is also having electric field which is oscillating, तो उसकी frequency यहाँ है. So यहाँ पे mu naught is the frequency of light. Here it is mu vibration, the frequency of vibration that is involved. And the two things now you can write and expand the terms. Mathematics will follow, the mathematical details. So expand this term, write alpha, beta is the d alpha by dq, change in polarizability with vibration, or q is the vibrational coordinate or rotational coordinates in general. So induced dipole, now we can write with full term, full expression, अल्फा बीटा साइन. सो इसको आप एक्सपेंड कीजिए. इसको आप एक्सपेंड करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन ए साइन बी, ओके, इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. सो व्हेन यू ट्राई टू राइट दिस एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म एक तरफ, सो यू सी कॉस ए माइनस बी यहाँ पे हो गया, कॉस ए प्लस बी वाला पैटर्न यहाँ पे हो गया. तो इस तरह से करके आपके पास 1 2 3, I have given 3 colors. So suppose if you are using, the color has its meaning. Why? So we have 3 sets of induced dipoles. अब 3 तरह के induced dipole हमें दिख रहे हैं. एक induced dipole है जो oscillate करेगा at the same frequency as that of the incident radiation, right? दूसरा, it is oscillating with a slightly reduced frequency, which we now observe as a photons with reduced energy, so it will be red in color. You have another third component, the type of induced dipole which vibrates, which oscillates at a slightly higher frequency, giving out the radiations, and that is anti-Stokes scattering. So addition of this thing. So इस तरह से you can see, so the 3 components we can find, and taken together this Stokes and anti-Stokes scattering is called Raman scattering. So for rotation case, if you want rotation state of rotational of a molecule to be Raman active, it can have any other shape other than that of a spherical rotor, okay. So beta naught is the change, it is 0 for, that is the change in beta क्या था, d alpha by dq था. Polarizability with vibrational coordinates. So variation of polarizability with change in the vibrational coordinates. So in case of a diatomic molecule, it is simple, the displacement of atoms from its mean position. So that is what we mean by change in the vibrational coordinates. So this we have already discussed. In case of H2 molecule, we have anisotropic polarizability. We say that alpha parallel is greater than alpha perpendicular. Now, in order to draw it more systematically, there is something that we use, is called polarizability ellipsoid. Polarizability ellipsoid draw किया जाता है इन सारे molecular जो rotation vibration of a molecule happens, and you have a change in a dipole moment is induced, और उसको जो सारा समझने के लिए कोई चीज़ रमन एक्टिव होगा नहीं होगा, कौन सा मोड कितना होगा, इसके लिए पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का यूज किया जाता है. एलिप्सॉइड का मतलब समझते हैं, एलिप्स के जैसा होगा,
एक एलिप्स बनाओ और एक बार 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको रोटेट कर दो अराउंड द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो जो 3D पिक्चर बनेगा उसको एलिप्सॉइड कहते हैं. Take an ellipse, which is two-dimensional thing on a piece of paper, rotate it along the major axis, पूरा 360 डिग्री रोटेट करो, rotate it along the minor axis 360 degrees, and then uh, the structure that is formed is called polarizability ellipsoid. ये जो क्या है ellipsoid है, it is आपने क्या पढ़ा है, स्केलर, वेक्टर, और ये तीसरा एक और होता है टेंसर. When we so this polarizability ellipsoid is polarizability is a tensor. When we talk about polarizability, we call it as it is a tensor. It is not a vector. It is not a scalar quantity. It is a tensor. Tensor क्या होता है? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और 3D शेप भी होगा. It will also generate a 3D shape. Tensor. So orientation, direction, so it is represented by a 3D picture, which is we call as ellipsoid. And so to represent it, ellipsoid, इस वेक्टर में बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, we draw arrow, and you should, so this is the thing that, so it is a tensor. Polarizability is a tensor, and we draw ellipsoid to show all the three things of the associated with that tensor. So so what is this polarizability ellipsoid? Let's try to understand. And how do we draw it? Okay, so now when we know this thing, Raman activity, how do we say that something is Raman active or not active? One thing is that the molecule must have anisotropic polarizability. This is true for rotation actually. Anisotropic polarizability होना चाहिए. And polarizability ellipsoid is a 3-dimensional, जैसा कि मैंने कहा, it is 3D things, and it is plotted as a function of 1 by under root alpha from the center of gravity in all directions. Polarizability ellipsoid 1 by under root alpha करके होता है. Okay, so and this so there are three aspects of polarizability. एक मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, और तीसरा उसका शेप भी हो गया. तीनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज करती है तो वो रमन एक्टिव होगा. So any of the three aspects of this, any one of the three aspects must change during the vibration or rotation for a molecule to be Raman active. So it is in contrast to the previous thing, whether it was IR or microwave spectroscopy, where we had infrared spectroscopy जो था या microwave spectroscopy था, उसमें there was a clear change in dipole moment was required. That was the essential condition. Whereas in this case, it is the oscillating, it is the polarizability that must change during the vibration. So it is not a simple oscillating dipole phenomenon.
as we had viewed in case of so absorption was a typical oscillating dipole phenomenon in infrared and molecular microwave thing, but here it is different. Okay, so so polarizability must change during the vibration for vibrational mode to be Raman active. And for rotation to be Raman active, the polarizability must change as the molecule rotates. As simple as that. मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तब भी पोलराइजेबिलिटी चेंज होना चाहिए और पोलराइजेबिलिटी वाइब्रेशन के दौरान भी चेंज होना चाहिए तब वाइब्रेशनल एक्टिव होगा सो this intensity, this is for intensity of the scattered light will depend on the Raman scattering will depend on intensity will in incident light की intensity पे depend करेगा and it will depend on d alpha by dq. Change in polarizability with वाइब्रेशन जैसे जैसे वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग कंप्रेशन अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है और ये इंसिडेंट लेजर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट दो चीज़ों पे रमन का सिग्नल करें यूजुअली दिस इज अ लेजर दैट वी यूज इंसिडेंट लाइट ओके इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा सो अब किसी में अगर पोलराइजेबिलिटी का चेंज ज़्यादा हो रहा है किसी पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड में तो वो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा जिसमें कम चेंज आ रहा है वह चेंज रमन एक्टिव तो होगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी सो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं so let's yeah so scattering polarizability must change linearly with vibrational motion or vibrational for vibrational Raman scattering to occur. Greater is the change, मतलब higher this value. When we say greater is the thing, we mean this d alpha by dq is high value of d alpha by dq. More intense is the Raman scattering. So if alpha is unchanged, then of course there is no Raman scattering. So alpha, so if it is 0, 0 intensity, that effective, which means that it is Raman inactive. ठीक है सो एलिप्सॉइड क्या होता है एलिप्सॉइड यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो पोलराइजेबिलिटी को एज एन एलिप्सॉइड दिखाएंगे एलिप्सॉइड क्या होता है ऐसा अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में ये एक एलिप्स है और इसको अगर हम रोटेट करें मेजर एक्सिस ए एंड बी के अलाउंग तो जो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम कहते हैं एलिप्सॉइड ओके सो दिस इज अ सॉलिड 3-dimensional व्यू surface of a solid is called ellipsoid if so इसका क्या खास बात है it is formed by rotating an ellipse around either axis a और b जो major minor axis होता है so this is your a is major axis b is your minor axis और दोनों के along rotate करने से जो बनता है उसको कहते हैं ellipsoid okay so it is a geometrical surface in which all or whose plane sections are either ellipse or circles अगर आप उसको कट करें किसी भी डायरेक्शन में तो एक एलिप्स निकलेगा या फिर एक सर्कल निकलेगा so that kind of thing is a ellipsoid this is your ellipsoid a typical ellipsoid is this one now this kind of thing we have to draw for different molecules
and try to understand. So let's take the first example. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे. अब एलिप्सॉइड में हमने कहा इट इज द स्केल इज 1/अल्फा. 1/√अल्फा इज द स्केल, है ना. और इसको लेके ड्रॉ करते हैं. मतलब जिस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा वो एक्सिस छोटा हो जाएगा. सो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है ना. सो in fact you have, so this is your electron cloud which is like this. This is your electron cloud, right? So when you apply electric field, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये आपका एलिप्सॉइड है, which is, so because polarizability is more in this direction, and so because, तो 1/अल्फा का जब स्केल लेंगे तो ड्राइंग में हमारा इस डायरेक्शन में, so smaller 1/अल्फा means larger value of alpha. Small axis, large value of alpha. So ये उल्टा चलता है. जिस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, so the polarizability is greater along this direction, HH बॉन्ड के along, और इसलिए ये जो एक्सिस है इधर छोटा ड्रॉ किया गया है. और दूसरे साइड में दूसरे डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी कम है, वो वाला फिर आपका 1/अल्फा का जो स्केल है इधर. So along this axis polarizability is less polarizability along this direction, लेकिन तो 1/अल्फा का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो एक्सिस बड़ा दिख रहा है. तो ये उल्टा चलता है. This is, so this is running in opposite to what we think about in terms of electron cloud. It is simple. Polarizability is more along where you have more electron density in the direction of electric field. So when you take 1/अल्फा scale for drawing the picture of ellipse, it will be like this. तो ये आपको दिखाया गया है. अब यही चीज़ यहाँ दिखाया गया कि ये दिस इज द हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम बिहाइंड द स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, इन फ्रंट एंड ये बिहाइंड. सो ऐसे केस में अब आप व्हेन यू visualizing the electric field to be like this, so it will be in all direction. When you are viewing from this angle, the electric field will be so along this axis, on this axis, it will, the polarizability will be same for this if the molecule is kept like this. Okay, so it generates a sphere on from this side. या फिर आप इसी एलिप्स को ऐसे टेढ़ा करके देखें, एलिप्सॉइड को, तो आपको सर्कल जैसा दिखेगा. वही चीज़ है. So where the polarizability is greatest, the axis of ellipsoid is least and vice versa. So this runs in opposite to the, so the hydrogen molecule and its polarizability ellipsoid, when we view it at the right angles, तो ये ऐसा हमें दिखता है. So ellipsoid का so for polarizability of any diatomic molecule is the same for all directions. When you are viewing perpendicular to the bond axis, same. So this is the second case. When perpendicular to the bond axis, जब उसको व्यू कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये perpendicular to the bond axis है और ये in direction to the bond axis है. So when we are looking at it in this way, then the ellipsoid has a circular cross section and it is shaped like tangerine. Tangerine क्या होता है? For all diatomic molecules, it is this one. It is not like orange, it is like tangerine. So ये देख रहे थोड़ा सा चपटा है और बीच में
काफ़ी हद तक सेम वैल्यू आएगा, मतलब उतना कर्व नहीं है इसमें. So you can note this. So for all diatomic molecules such as CO, HCl या फिर polyatomic linear polyatomic molecules, they all have general shape. The polarizability ellipsoid will have this kind of general shape, same general shape that we are talking about, tangerine like, and only it will differ in terms of the size. The major axis, minor axis will increase or decrease, but the overall shape generated would be like this. So ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? Because using this vibrational Raman spectra, you can, अच्छा, infrared spectroscopy से तो आप कर ही नहीं सकते. For all homonuclear diatomic molecules, you can never think of IR spectroscopy, नहीं possible था. So you didn't have any data for the vibrations. एंड तो उसका फोर्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, उसका रोटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलेगा? अगर रोटेशनल कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप वो भी नहीं निकाल पाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मॉलिक्यूलर मास. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था. बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड थी. हमने देखा कि रोटेशनल कांस्टेंट से हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं. अब H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकालना है अगर, तो आपके पास till the time Raman spectroscopy was not available, there was no way you could do this. वो रोटेशनली इनएक्टिव है, माइक्रोवेव इनएक्टिव है, वो इंफ्रारेड इनएक्टिव है. तो विदाउट दैट, तो ये एक बड़ा सेगमेंट था होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का पर्टिकुलरली, जिसके लिए कोई उपाय नहीं था पहले. इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंफ्रारेड radiation, it doesn't respond to the microwave radiation, no absorption happens because there is no change in dipole moment during vibration or rotation. Okay, but for the same molecule, same hydrogen molecule H2, now it is possible to obtain a vibrational spectrum by performing Raman spectroscopy. By performing Raman spectroscopy, it is, you can also obtain rotational information about the rotational motion. So neither microwave nor you were not able to do earlier, but using this you will be able to find all the things. Rotational constant was important. Rotational constant was B, and using it you bond length, you arrived at bond length और बहुत सारा चीज़ useful information आपको मिल जाता था, which is now possible. तो which is now possible, but earlier it was not possible without Raman spectrum. So this is one of, so you should be able to appreciate this, the greatest contribution of Raman spectroscopy, C.V. Raman. C.V. Raman contributed in a big way to the fundamental understanding of molecules, particularly diatomic molecules, which were not, till that time there was no data, rotational data or vibrational data available. So in absence of those data, the bond length cannot be determined, right? तो उसके ये सब आसान हो गया आपको. Okay, so that's why, so we keep on drawing the things, and so we can stretch that idea, further stretch your imagination, and you can draw the polarizability ellipsoid for water. Water के लिए कैसे? You can also draw polarizability ellipsoid for CaCl3. तो water के केस में पहले देखिए three views. One, all the two hydrogen atoms are in the plane. All the three molecules are in the plane. और अब इस केस में अगर आप देखें तो polarizability ellipsoid seen along the three coordinate axes, x, y, z करके आप देखेंगे. So you can draw three different pictures looking at the thing. ठीक है. Longer, remember, it is the 1 by alpha.
under root alpha thing. So longer axis means very very small polarizability in that particular direction. So जब ये स्क्रीन के बाहर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन स्क्रीन के पीछे है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, सोचिए कि यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, so you have maximum polarizability for this, so here major minor, major axis minor axis, this is your major minor, सॉरी मेजर माइनर यहाँ पे उल्टा लिख दिया, मेजर एलिप्स का जो मेजर तो ये वाला है, ये मेजर है, ये माइनर है, मतलब छोटा वाला जो है ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी. So along this direction, in this particular case, visualize this. So in this case, the two water molecules are almost not exactly in the plane of paper, but plane of the board, but slightly they have been brought in contact, मतलब थोड़ा सा tilted है. ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा आपको you have greatest polarizability along this direction. इस पिक्चर के लिए आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट पोलराइजेबिलिटी alpha in this direction, less polarizability for this particular thing in this direction, least ठीक. So इस तरह का विजुअलाइजेशन है. CHCl3 again you have pictures, so it appears like a sphere, almost, so from across and along the symmetry axis, so you have axis of symmetry. So in this case you have CHCl3, so along the, so this is along this axis, principal axis, and in this case you are looking at the across axis, principal axis. The view is like this. So is there a draw here, but we will discuss more on this. Okay, so we will try to understand more on this in the next class. पर एक चीज मैं दिखाऊं, हाँ, ये जो पोलराइजेबिलिटी है, अभी जो मेरे पास वीडियो था, हाँ यहाँ पे क्रुशियल, जैसे if we want to take an example, we had water, take the example of water, so the three doesn't have a center of symmetry. एक मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ. Can you see this? So you see polarizability ellipsoid. So this is your what? Bending mode. So during the bending, you can see this is your Q coordinate system. The polarizability ellipsoid changes its value. It says the bending mode, you have, see this point, how it is changing. The Q, d alpha by dq is a straight line plot. Sorry, this is the dipole, sorry, this is the polarizability. If we look at the other one, polarizability ellipsoid is also changing here in size. In case of symmetric vibration में आप देखिए पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड छोटा से बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए. ओके, थर्ड पिक्चर फॉर दिस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? There are three things happening in one case. See, in this particular case, when you have asymmetric stretching, there is no change in the size of the ellipsoid, but there is change in the direction, है ना?
इसके पहले वाले पिक्चर में क्या था? हाँ, in case of symmetric stretching, there is no change in the direction. There is no change in the direction or orientation of the ellipsoid, but there is change in the size. That is magnitude change हो रहा है. So one of the aspect is changing in all of them. It is a tensor that I told you. So in the first case, what was there? There is change in the shape when it is a bending motion, bending mode. Look at the green one here. It is as the vibration occurs, there is change in the shape of the ellipsoid. So एक में shape change हो रहा है bending के केस में, जब symmetric stretching हो रहा है उस केस में there is a change in the size of the ellipsoid, which means the magnitude, which actually represents the magnitude change हो रहा है ना? और तीसरा था जब हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो साइज भी चेंज नहीं हो रहा है, शेप भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो टेक्निकली all of them are expected to be Raman active. At least one of the aspect of this thing, directions, shape, or this thing is changing in all of them. चलिए ठीक है. So we'll continue this discussion in the next class.